Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wa an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa anta ta'ala lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sajjatul ladzi khalaqahu wa sawwahu wa bi qawli wa ta'ala qawli sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sepuh istri orang nanti berpasti dan para ahli, para ulama, para kiai, istri kan berpasti ikut istri ikut antu mayu asal itu. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat masih stabil kita tak bikin kata sabina Quran Allah SWT. Saking takbir ngaturaken agama turun pilih dan sami sampun nuwun boten atur panuwun takbir rajin iki. Boten kesukaan beliau nyata ngaturaken sholawat salam tunjuk kaliyan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketansa kita ajeng-ajeng kata tabibe kita kadang kesayangan datang kita ikut Gusti Allah dengan ibadahipun almarhum beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kontan boten kanthi syukur nyebut Allah Subhanahu wa taala kanthi sabar berkah panjenengan karomatan kenikmatan wekdal kok paring Gusti Allah saged dipun paring kesempatan saged nindakaken kewajiban tolak ini. Mugi-mugi majlis taklim lan mugi-mugi majlis zikir menika nanti saged mbekta hikmah. Saged mendhet hikmahipun, fadilahipun pepanggihan wonten ing dalem. Lan mugi matur nuwun sanget kemudian sami takbir masjid estu ing tansah sampun benar sami sampun rawuh lan nyuwun ngapunten anggenipun panggi panjenengan sami anggenipun lenggah panjenengan sami ingkang dereng saged nglenggahi menapa atur panghormatan yang sami. Pamir masjid estu pakar kekiranganipun nyuwun agungi panggi. Salajengipun monggo sareng-sareng kita midhangetaken lan ngatosaken menapa ingkang dipun tumungke kaliyanipun kiai ingkang sampun kula dan sami mangertos kirang kita sami kita bila mugi-mugi mangketasian betul hikmah kula barokah dhateng kula sami anggenipun paring tidak dhateng kula sami. Menawi mengaten anggen kula matur sejogeran ngapunten. Aku kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu Rasulullah yang sampun para sambutan. Kita berhasil salah itu di rumah Jakasana. Jadi banyak ibu Fadil Syekh Al-Alim Al-Akbar Al-Ghanam Hanafi Al-Ghalistan termasuk terjemahan Syekh dan Kasnagakan Image Negara Rasa Pakistan Makhluk Image berikut terjemahkan dari kajian itu. Ustaz Sabul.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सारे हाज़रीन मजलिस को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी जमात ये पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई है। ये हमारे यहाँ तश्कील है जुगजा में, सुलेमान में, तो 7 महीने। तो हम यहाँ के जितने हाज़रीन मजलिस हैं, ख़ुसूसन हमारे उस्ताद मुहतरम और तामीर मस्जिद और जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हाज़रीन मजलिस हैं, तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुबारक मजलिस में हमें शरीक फरमाया। तो ये हमारी भी खुशकिस्मती है, आप लोग की खुशकिस्मती है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini saya maksudnya beliau ini dari Pakistan dalam acara dakwah. Lagi ada acara dakwah di daerah Sleman. Beliau ada sekitar 5 orang dari Pakistan datang ke Indonesia, khususipun di Sleman dalam acara dakwah selama 7 bulan. Mereka genap 1 tahun, terus 5 bulan sudah berada di Pakistan dan 7 bulannya untuk bersilaturahim menjumpai saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia, khususnya Sleman. Terus alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Ari dan Bapak Takmir Masjid dan para jamaah Masjid Al-Mutakin punika sampai semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah, majelis yang diridhoi oleh Allah SWT. इंशाअल्लाह मैं चंद ज़रूरी गुज़ारिशात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्शान का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम और आपको मुसलमान पैदा फरमाया है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत बनाई है। ये इंशाल्लाह ज़रूर जन्नत में जाएंगे। Mata sebagai Jawa ini kok ini. Ikhwan itu bahasanya bahasa Urdu. Kalian bahasa India, Pakistan, Bangladesh itu bahasa Urdu. Aslinya maksudnya sapi mau aja. Ini alhamdulillah Allah SWT ini sampun nyiptakake kula panjenengan sami niki dados tiyang muslim. Nah niki suatu nikmat ingkang ageng sangat. Kula panjenengan sami boten nyuwun kali Gusti Allah diparingi iman dalam iman kita. Nggih boten nanging Allah Taala maringi iman dumateng kula dasar ini suatu nikmat ingkang paling ageng. Karanten sebab iman punika niki bakal ngantarake kula lan sami teng akhirat lan badhe mendapatkan kebahagiaan ingkang saklawas-lawase. Nah, sebab napa? Sebab iman punika. Sebab iman punika kula lan sami bakal ngentoke kebahagiaan sing hakiki saklawas-lawase teng akhirat iman. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Allah Ta'ala fi maqamin akhar waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala alaihi salatu wassalam mafhumul hadis kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah kalau sesama ini diciptakan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kula sami kita di umat kang terbaik. Wonten ing mafhum ayat Al-Qur'an untuk khairul ummati, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang mana kalian itu dikeluarkan untuk manusia, yang mana apa tugasnya, yaitu mengajak manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan dalam mafhum hadis yang lain, dalam mafhum hadis dikatakan setiap umat Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga. Setiap umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi mlebet surga. Kejaba tiyang ingkang boten purun. Maksud juga boten purun. Itu sinten? Para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sinten Kanjeng Nabi kok umat nipun kok boten purun mlebet surga niki? Iku sinten? Sing tiyang taat dumateng Nabi niku badhe masuk surga, dan tiyang kang boten taat kalih Kanjeng Nabi niku bakal niku lah tiyang sing ingkang boten purun mlebet surga. Monggo masyaallah ing dateng hadis ingkang sanesipun hadis akhir lan pentingipun nguripake sunnah niku enten fadilahipun. Itu sapa wong sing nguripake sunnah Kanjeng Nabi mongko dhewe niku tresna kalih Kanjeng Nabi. Lan sapa sing tresna kalih Kanjeng Nabi maka bakal mlebet surga kalih Kanjeng Nabi. Semoga kula lan sami niki termasuk tiang-tiang ingkang purun mlebet surga. Lan tiang-tiang ingkang ngurip-nguripake sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह जल शानुहू हमारा खालिक है, तमाम कायनात का खालिक है, जो जितने हज़रीन मजलिस हैं इस वक्त अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी सुन रहा है, अल्लाह हमारे दिल की राह से बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला व हुवा यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जो काम हम करते हैं अल्लाह ताला को उनका इल्म है, कोई चीज़ अल्लाह जल्ल शान के इल्म से बाहर नहीं है। वो हर चीज़ का इल्म रखता है, वो हमें देखता है, हमारी सुनता है, वो हमारे दिल के सुदूर व यअलम फी सुदूर, तमाम इंसान के जो दिल के अंदर छुपी हुई बातें उसको भी जानता है। ला यख्फा अला शैइन, कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं, ज़मीन में आसमान में। तो वो अल्लाह जल्ल शान की ज़ात हकीकी ज़ात है, जिसने हमें पैदा फरमाया, तमाम कायनात को पैदा फरमाया, सिर्फ वही इबादत का लायक है। तमाम नबियों ने यह सबक सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो। वला नअबुदु इल्ला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो इबादत के लायक है। ला मअबूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। Kemudian saya baca Indonesia ya.
Iya. Agak kagok-kagok Allah Subhanahu wa taala itu zat Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jadi semua yang bisa kita lihat dengan mata kita ini semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang mengetahui, Maha mengetahui. Jadi kita duduk di sini, kita lagi ngapain itu Allah Taala sebenarnya Maha mengetahui. Nah, yang diperbuat oleh tangan kita, yang diperbuat oleh kaki kita, yang terpikir oleh diri kita, bahkan yang terbesit dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita akan mengetahui siapa yang wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, setiap kita sholat pasti membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dan hanya kepada Allah Taala tempat untuk meminta pertolongan. Jadi zat yang wajib kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita, yang menciptakan dunia ini dan alam semesta ini. Maka zat yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. तो अल्लाह जल्ले शान ने अंबिया अलैहिस्सलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम बेश अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ही तौहीद का कलमा दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जल्ले शान ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अल्लाह जल्ले शान ने कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अल्लाह जल्ले शान ने कौम समूद की तरफ स्वालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने अपनी कौम को तबलीग की, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अल्लाह जल्ले शान ने मदयन की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। व इला मदयन अख़ाहुम शुएबा क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफ़्लिहू या अय्युहन्नास इला यौमिल क़ियामा। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम ज़मानों के लिए नबी बनाकर भेजा, खातिमुन नबीयीन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मफ़हूम है अना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा और उसने भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के इंसानों को पैगाम दिया, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो कामयाब हो जाओगे। Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124 para anbiya, 124.000 para anbiya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir nabi. Semua nabi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini para nabi ini mengajak umatnya untuk taat kepada Allah taala, untuk mengajak, untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk kaumnya, maka orang-orang yang mentaati nabinya maka selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak mentaati Nabi Nuh, maka Allah Taala tenggelamkan. Nah, begitu juga Nabi Soleh alaihissalam
diutus untuk kaumnya, orang yang taat kepada Nabi Soleh alaihissalam, maka mendapatkan kebahagiaan. Dan orang yang tidak taat mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap Nabi itu diutus lagi, sampai akhir Nabi Muhammad SAW sampai akhir Nabi. Maka meskipun umat sekarang ini kita, meskipun betapa buruknya kita, betapa jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lalainya kita, betapa maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diutus nabi lagi. Jadi nek sing ngaku-ngaku nabi ampun percaya. Ya. Karena apa? Karena nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah akhirun nabi. Nah, tidak akan diutus lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita ini jauh dari Allah Ta'ala, tidak akan diutus lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam mafhum hadis, setiap umatku akan masuk surga. Yang hadis yang awal tadi, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yaitu orang yang mentaatiku akan masuk surga, dan orang yang enggan, maka inilah orang yang tidak mau masuk surga. Maka bagaimana kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan umat yang terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita juga berpikir kepada saudara kita agar tidak akan putus Nabi. Maka usaha saling mengingatkan ini adalah tugas kita bersama, ya. Saling mengingatkan adalah tugas bersama. Kalau dulu yang dakwah ini cuma nabinya saja, umatnya tidak diizinkan, tidak ada legalisir, tidak ada mandat, tidak ada izin untuk mendakwahkan agamanya. Tetapi khususnya sebagai kita, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diberikan izin, diberikan level, kamu bisa mendakwahkan agama ini. Dan kita, inilah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. तो हाजिरीन मजलिस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा शान, नबी अलैहि सलाम सहाबा के साथ जब कदर सहाबा उहद के पहाड़ पे चढ़े, उहद मदीना मुनव्वरा वजह उमरा मौजूद हाजिरीन, उमरा हज मदीना मुनव्वरा उहद गुनज उहद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उहद के पहाड़ पे चढ़े तो उहद का पहाड़ हिलने लगा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, ए उहद आप क्यों हिल रहे हो? आप देखते नहीं आपके ऊपर दो जहानों के सरदार खड़े हैं। अल्लाह, हमारे नबी के निशान। तो उहद ने क्या जवाब दिया? मैं हिलता नहीं, मैं खुशी से झूम रहा हूँ, मैं खुशी से झूम रहा हूँ। हमारे नबी का कितना बड़ा शान। Kita itu harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Madinah, kata beliau, ada yang tahu Gunung Uhud? Ada yang tahu sebab Gunung Uhud? Yang pernah haji atau umrah mereka? Gunung Uhud. Dulu sahabat sama Nabi itu sedang menaiki Gunung Uhud. Sedang naik Gunung Uhud. Lalu Gunung Uhudnya itu malah berguncang-guncang. Terus sahabat ini bertanya kepada Gunung Uhud. Ini sudah khususnya Nabi dan sahabat. Sahabat bertanya kepada Gunung Uhud, Gunung Uhud, kok jenengan itu malah goyang-goyang kok? Niki enten Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi napa pripun. Terus Gunung Uhud dengan kuasa Allah Ta'ala menjawab, saya ini bukannya apa-apa, tapi saya ini saking senangnya saya ini diinjak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Niki Gunung Uhud pun gak ada perasaan tresno kalih Kanjeng Nabi. Apa maneh kula lan sami dados ikut umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Butuh luwih tresno kalih daripada Gunung Uhud.
तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं we were passing through bushes and stones, हम जा रहे हैं तो bushes और हजर पत्थर क्या बोलते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जरा अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु की शहादत देते हैं, पत्थरों से पूछों से आवाज आ रही है, सलाम डाले प्यारे नबी की इतना बड़ा शान। Terus kalau tadi gunung Uhud, saya ini benda mati malik. Nalikannya ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di Madinah, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu desa di Madinah, maka ada di sampingnya itu ada batu. Ketika Nabi Muhammad SAW lewat, maka batu itu bersolawat, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibullah. Niku apa waktu saking senengnya kali kanjeng Nabi, maka waktu niku solawat kali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka masya Allah, ini benda-benda mati pun remen kalian kanjeng Nabi. Apa balik pulau dan pada saat ini dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. तो आप सल्लल्लाहु मदीना मनौरा में एक यहूदी ने हीवान पकड़ा जानवर। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहूदी से हाँ कि अपनी जानवर को छोड़ दो, इसकी बच्ची भूखी है, ये दूध पिला के वापस आ जाएगी, इसकी बच्ची भूखी है। तो यहूदी ने कहा कौन जमानत देगा? आप अलैहिस्सलाम मैं जामिन हूँ, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। बल्कि उसने छोड़ दिया। तो ये हीवान, ये हिरन गई, बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ गई। आप अलैहिस्सलाम के बाद हाजिर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहूदी से कहा कि बराबर कीमत कितना पैसा लेते हो, मैं पैसे दे दूं, ये मुझे दे दो हज़रत को। तो यहूदी ने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फौरन मुझे कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, दाखिला फी इस्लाम। Terus pakai, main atas nahi, aca. Terus pun itu bisa orang Yahudi niku sedang mengikat hewan, mungkin hewan keledai atau apa, diikat oleh orang Yahudi. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW lewat melihat itu, lalu orang Nabi Muhammad SAW bicara sama, maksudnya keledai itu mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Sini ada orang Yahudi mengikat saya. Padahal saya ini habis melahirkan anak saya tinggal di sana. Ini khususnya kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa bicara dengan hewan, dengan batu dan sebagainya. Ini hewan keledai ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mengadu maka Nabi Muhammad SAW bilang kepada Yahudi, tolong lepaskan hewan ini. Ini hewannya ini masih meninggalkan anaknya di sana, belum sempat menyusui. Kok kamu mengikat? Tolong lepaskan. Orang-orang Yahudi itu berkata, oh nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Ini hewan saya, terserah saya mau saya ikat mau apa, terserah saya. Maka Rasulullah SAW merayu kepada orang Yahudi, udahlah lepaskan dulu sebentar saja biar dia itu pergi menyusui anaknya terus balik lagi. Nggak bisa ya Rasulullah, apa jaminan engkau? Orang Yahudi nyuwun jaminan. Udah jaminan saya akan di sini menjamin nanti
keledai ini biar menyusui anaknya dulu, terus nanti biar balik. Nanti kalau nggak balik saya yang menjamin. Maka orang Yahudi percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka keledainya dilepas. Setelah dilepas, maka keledai itu langsung lari dan pergi menjumpai anaknya. Yaitu langsung menyusui di situ. Setelah menyusui, langsung kembali ke apa? Ke orang Yahudi tadi, langsung diikat lagi keledai itu. Oh, ini kan kembali lagi kan keledainya. Maka singkat cerita, orang Yahudi itu terkesan dengan khususnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Yahudi itu sebab akhlaknya Nabi, sebab mukjizatnya Nabi, maka orang Yahudi itu syahadat masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu langsung orang Yahudi masuk Islam. Allahu Akbar. तो हाजिरीन मजलिस मुआज़िज़ीन सामीन, हम 24 घंटे की ज़िंदगी में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारे। हमारी सूरत नबी, सीरत नबी, सरीरत नबी, 24 घंटे ज़िंदगी में हम अल्लाह के हुक्म को देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को देखे। हमारी ईमानियात, हमारी इबादत, हमारे अखलाक, हमारी मामलात, हमारी मुआशरत सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के सांचे में आ जाए। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा का हुक्म क्या है? वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। Allah Subhanahu wa ta'ala Bapa pernah bagikan Atiyullah wa atiyur rasul, Atiyullah wa atiyur rasul, Atiyullah wa atiyur rasul, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima। यानी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आप मेरे नबी का, मेरे महबूब का इत्तिबा करो। जो अल्लाह के नबी के महबूब का इत्तिबा करेगा, अल्लाह पाक उसका अपना वली बनाएगा। वलीसों को बुजुर्गान दीन कितना गुजरा है, उन्हें हुजूर का इत्तिबा किया है, हुजूर को जिंदगी को अपनाया है, तो अल्लाह ताला ने उनका अपना वली बना दिया। अल्लाह उनके साथ प्यार करेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु के इत्तिबा में दुनिया जहान की कामयाबी है। Maka bagaimana kita buktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Caranya gimana kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Maka bagaimana selama 24 jam kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Gimana caranya menghidupkan sunnah selama 24 jam? Kok bisa? Karena setiap aktivitas kita ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama 24 jam kita mau makan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana sunnahnya ketika makan, gimana sunnahnya ketika tidur, bagaimana muamalah yang benar, bagaimana muasyarah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita hidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa? दूसरे के इत्तिबा करना चाहिए। 24 घंटे की ज़िंदगी में अल्लाह नबी का तरीका, ईमानियात, इबादत, अखलाक, मामलात, मुआशरत सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Lalu dalam ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh, ini sudah fakot, fakot itu sudah teman-teman. Kot ini tauhid, kot fakot faza itu fiil madi, ikan pasti sudah. Jadi kejayaan, kebahagiaan sudah terjadi, pasti mendapatkan kebahagiaan. Fauzan kita bilang fauzan niku
Masdar ngangge tau itu malih faqad faza fauzan azima gen ageng malih faqad faza fauzan azima niku nek diapake basane bener-bener faqad faza fauzan azima wong teman-teman ngejawab banget. Jadi, Masya Allah, maka kita berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mentaati Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Nabi SAW khatim Nabi ini, कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया कि क़यामत तक इंसान पैदा होंगे, नबी नहीं आएगा। अब जो नबियों की जिम्मेदारी थी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। जब अबू बकर को ईमान लाए तो उस वक्त अल्लाह के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे ना, नमाज काज़ा रोज़ा ज़कात आए। तो अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अब मेरा क्या काम है? आप फरमाया लोगों को दावत दे दो। तो एक दिन में 4-5-6 आदमियों को दावत देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर किया, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो 13 साल मक्का मुकर्रमा में आप अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी। कलमे की दावत दी 13 साल मक्का मुकर्रमा में तकलीफें बर्दाश्त की। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अलविदा पर सहाबा को समझाया, हल बल्लग़त रिसालत व अदैतल अमान। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपने तो हक दीन का हक अदा कर दिया, आपने तो हमें पूरा दीन पहुंचाया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद। सहाबा की तरफ तवज्जो है, फलयुबल्लिगुल शाहिदु मिनकुमुल गायब। तो सहाबा किराम सरूर मुनसिया कर गए, सरूर मुनसिया ये कलमे का पैगाम पहुंचाने के लिए। तो सहाबत इंडोनेशिया है, सहाबत पाकिस्तान है, सहाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफगानिस्तान है, सहाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्रीका, भाई सहाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजी गए, फिजी आखिरी, उसके बाद कोई इंसान नहीं रहता है फिजी। तो सहाबत दीन की कुर्बानी किया। तो सहाबा इस उम्मत का कुरूने ऊला है, इस उम्मत का कुरूने ऊला। तो सहाबा ने अपनी जिंदगी को साबित कर दिया कि इस उम्मत की बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, नबी वाला काम करना, लोगों को अच्छे काम की तरफ बुलाना, लोगों को बुरे काम से मना करना। तो ये इसका नाम तबलीग है, ये नबी वाला काम, ये तबलीग है। और इसके अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह जल शान सूरत यूसुफ में फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, कुल अपनी उम्मत से फरमाइए, हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी ये लोग दुनिया के अंदर कामयाब मुफ्लिहून, अल उलमा यकूल हाउलाए नास हम मुफ्लिहून फी हाज़िहि दुनिया कज़ालिका फिल आखिरह। Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatul islam. Insyaallah. Lalu Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk memahamkan umatnya, untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW membuat dakwah, ketika Nabi Muhammad SAW itu baru sendiri ketika itu, maka orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, setelah ini, maksudnya setelah Islamnya saya ini, apa yang akan aku buat? Maka
Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, apa yang aku buat, apa yang aku kerjakan itu juga kerjaan. Yaitu apa? Mengajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar sudah mendengar seperti itu, maka Abu Bakar langsung mendakwahkan, mengajak manusia kepada Allah, yaitu pada kawan-kawan, yaitu pada para sahabat yang lain. Sehingga sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka banyaklah sahabat-sahabat yang masuk Islam juga. Ketika semakin hari tambah hari, maka ketika itu orang Islam semakin banyak di Mekah, dan ketika itu masih di Mekah. Ketika sudah banyak sekali, maka mereka sampai ke Madinah. Ini sebab apa? Sebab ada usaha dakwah, kan? Sebab ada usaha dakwah. Jadi setelah itu, masya Allah, para sahabat itu menyebar ke seluruh dunia, ke Jordan, ke Palestina, ke Turki, ke Rusia, bahkan yang di Indonesia juga ada, sampai ke Indonesia. Jadi agama ini menyebar itu sebab ada perjuangan. Agama ini menyebar karena ada yang menyebarkan. Agama ini tersebar sampai di pelosok-pelosok kampung, bahkan di Indonesia kan jauh dari mana? Dari Mekah. Terus gimana kok bisa mengenal agama di sini? Karena ada yang mendakwakannya. Kalau beliau katakan, kalau di Indonesia ada wali songo, ada wali songo. Karena beliau kan juga rasa pengetannya besar. Gimana kok Indonesia ini? Saya katakan wali songo. Terkesan beliau. Agama tersebar salah satunya dengan ada orang yang mendakwakan agama. Kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah wali songo. Jadi agama ini tersebar karena ada yang menyebarkan, ada yang mendakwakan. Maka bagaimana kita juga punya risau dalam diri kita, bagaimana kita juga punya risau memikirkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita adalah mengajak mereka, mengingatkan mereka, saling mengingatkan untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat di antara kalian, ini mafhum ayat. Hendaknya ada segolongan umat di antara kalian yaitu mengajak kepada yang mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini mengusahakan diri kita untuk memikirkan risau. Kita sudah alhamdulillah sekarang bisa diberikan hidayah, diberikan kenikmatan untuk ngaji, diberikan kenikmatan untuk dalam majelis ilmu. Maka kita juga punya risau bagaimana saudara kita ini juga bisa merasakan indahnya, nikmatnya dalam menuntut ilmu ataupun ngaji. Maka insya Allah ya kita sama-sama memikirkan saudara-saudara kita. बस अल्हम्दुलिल्लाह बात मुख्तसर कर तो टाइम शार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान से जुमा की तबलीग की आती है 7 महीने, साल के लिए, 4 महीने के लिए, तो पाकिस्तान में बहुत निकलती है। लेकिन हम जब पाकिस्तान से जुमातें सारी दुनिया को जाती है, सारी दुनिया की तबलीग की जुमात जाती है, और सारी दुनिया से लोग तबलीग के लिए पाकिस्तान में आते हैं। बड़ा तबलीगी मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त 30,000 लोग उधर हर वक्त मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, सारी दुनिया में जमात दी जाती है। तो इसके लिए भी इंशाअल्लाह इरादे करें। बाकी हाँ हमें माल दिए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जो माल अल्लाह ने दिए, जो जान दी अल्लाह के दीन के लिए खर्च करें, मदरसों में लगाए, माशाअल्लाह मदरसों में पैसा दे दें, और अपने अनक बच्चों को हाफिज बनाएं, कारी बनाएं, आलिम बनाएं, और ख़ुद हम जो तबलीग करें, घर में तबलीग करें, महल्ले में तबलीग करें। तबलीग इतना मुश्किल नहीं, आसान है। आपके पास वक्त नहीं है, नियत कर सकते हैं। नियत खैरों में अमली,
आपके कोई वक्त नहीं है तो घर में तबलीग करो, महल्ले में तबलीग करो, मस्जिद में तबलीग करो। इन लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाना, मारूफात की तरफ बुलाना, अदाई अल खैर का फाइल। तो इंशाल्लाह तबलीग में जाने के लिए इंशाल्लाह अज़म करें, इरादा करें। बाकी एक गुज़ारिश के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बात सुना। terima kasih। इंशाल्लाह sebentar करेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे। Terima kasih. Ini bukan terima kasih akhir ini. Jadi beliau ini cerita keadaan di Pakistan. Jadi sebab adanya usaha dakwah di Pakistan itu banyak orang yang masuk Islam, banyak orang yang dalam mengamalkan agama itu semangat. Di sana umat Islam 93%, 93%. Yang 7% itu dibagi ada Hindu, ada Nasrani, itu yang 7% dan macam yang lain. Tapi orang Islam 93%. Nah, di sana kalau di sana itu madhab Hanafi, madhab Hanafi. Kalau kita adalah madhab Syafi'i. Semua ada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau Abu Zadi sebab adanya usaha dakwah sehingga orang-orang semangat dalam mengamalkan agama. Bahkan orang Pakistan dikirim ke berbagai daerah, ke berbagai negara, keluar 4 bulan. Kalau ke luar negeri dia 1 tahun, dikirim ke Indonesia, dikirim ke Malaysia, dikirim ke negara-negara yang lain. Bahkan beliau ini dikirim ke Sleman. Jadi dari sana itu ada ya seperti masjid ini markas, mereka diutus untuk dakwah ke. Jadi kalian keluar di Sleman. Jadi kata-kata Sleman itu sudah ada di sana di Pakistan itu. Sleman lebih detail lagi Ngagle, Ngemplak, Melati, Sregan, niku masya Allah niku. Dan insya Allah namanya insya Allah gunung itu berarti ada pikiran balik saking Pakistan. Nah, ini betapa risaunya orang Pakistan kepada kita di sini sebagai saudara Muslim. Betapa cinta mereka kepada kita. Masya Allah. Mereka itu mengorbankan dengan hartanya sendiri. Mereka meninggalkan keluarganya, ya kan? Mereka dengan mujahadah diri sendiri. Masya Allah. Untuk apa? Untuk menjumpai kita. Untuk apa? Untuk mengenalkan kita agar kita ini semangat lagi dalam beribadah. Untuk mempersiapkan kampung akhirat kita, kampung yang selama-lamanya. Untuk memahamkan sama saling mengingatkan. Mereka juga perjuangan. Kita alhamdulillah bisa mengundang dari Pakistan, ya kan? Ini dari saya. Bisa mengundang orang Pakistan ke sini. Kalau kita langsung mengundang dari Pakistan berapa biaya? Mikir ke tiketnya, visanya, paspor, dereng maeme, sangune. Ini alhamdulillah saking Sleman ngundang dia Pakistan. Alhamdulillah. Masyaallah ini Pak Kiai ini pinter kali ini. Antar politik gitu ya. Langsung undang sakit Pakistan masalah biayanya. Ini sudah takdirkan kita bisa orang Pakistan bisa singgah di Masjid Samping ini, mungkin terus berkah, terus amal jariah yang tinggi dan sakit nambah semangat balik pulang lebat dari sana. अल्हम्दुलिल्लाह ये बस इंशाल्लाह ये इस्लाम में मर्दों ने भी कुर्बानी की, औरतों ने भी कुर्बानी की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी ऐसी खातून थी कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सारा माल खर्च कर दिया, सारा माल। ऐसा जज्बा इस्लाम का, ऐसा दीन का जज्बा, सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले ज्यादा माल खर्च करने वाली मस्तूरात में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे पहली शहादत अल्लाह ताला की दीन के लिए सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे बड़े आलिम और मुफ्ती सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा।
ये सबसे बड़ी और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ सहाबा की मस्तूरात दे दी। बेशरी की तरह सबसे बड़ी दाई लोगों को कुफार के में दावत दी थी। तो हमारी मस्तूरात के अल्लाह ताला दिन के लिए बड़ा काम कर दिए। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ भी सुनाई, वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। यानी आज़ा बशर लिहाउलिन नास मस्तूरात मर्दों के लिए। तो इंशाल्लाह याज़रीन मजलिस सारा नियत करें कि इंशाल्लाह मेरा जान भी अल्लाह का, मेरा माल भी अल्लाह का, अल्लाह के दिन के लिए लग जाए। Saya niki tadi tinggung ibu-ibu newo kita namun sing jalan terus kayaknya. Jadi ibu-ibu. Jadi agama ini bisa kokoh, bisa tersebar itu tidak, salah satunya juga ada pengorbanan dari seorang wanita. Seorang wanita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebab ada kerjasama antara kaum laki-laki dan perempuan, maka seorang kaum perempuan itu menguatkan yang si laki-laki. Begitu juga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Terus orang yang syahid pertama kali seorang perempuan itu siapa? Sahabiah, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Ini agama ini tersebar juga atas perjuangan seorang ibu, seorang wanita. Ya, kita juga merasakan Pak ya. Kalau ibu putih Pak ngaji, wah Pak gue berusaha ngaji, terus pikirannya apa? Berpengaruh toh? Mungkin pengaruh seorang wanita besar sekali. Maka bagaimana seorang wanita juga paham bagaimana mendukung suaminya, mendukung pasangannya untuk apa? Untuk ngaji. Untuk ngaji. Dalam mafhum dalam ayat laki-laki dan perempuan yang saling berusaha untuk mengajak ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dalam ayat itu ada wanita dan laki-laki yang saling bahu-membahu dalam menegakkan agama. Insyaallah. Terus hari hadirin insyaallah niat करें, niat. जितने हाजिरी मजलिस से नियत करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला के दिन की खिदमत करेंगे। हाँ, पाकिस्तान तो आज जो इधर हम आए, उधर बहुत सारे इंडोनेशिया औरत है, पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं। कोई इंडोनेशिया वाला है पदपुलोहारी, कोई है पदपुलान, पाकिस्तान को सीर इंडोनेशिया औरत, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इंशाल्लाह नियत करें, नियत सारी। ये नियत बगे niat berikut Pulau semacamnya orang Pakistan sudah main ke Indonesia, ke Samping, nanti gantian yang Samping ke Pakistan. Makin niki badhe nyambut pokoknya, badhe nyambut, makanya menghitung nomornya ya. Makanya ada tiap Samping ke Pakistan menghubungi niki, makanya ketemu. दुआ इंशाल्लाह। लेकिन बिफोर दुआ इंशाल्लाह एक अर्ज है, फिलहाल आप इस तरह करें अपने घरों में, रूमा में, माशाल्लाह आजकल तो मस्तूरात भी पढ़ी लिखी हैं, रूमा में तालीम का हल्का लगाए, ज़ेल अमाल है, रियाज़ुस्सालिहीन है, 1-2 हदीस फी रूमा, इंशाल्लाह बरका। इंशाल्लाह नियत करो, हर साथी किताब ले लो, इंशाल्लाह 2 hadis, 1 hadis insyaallah rumah insyaallah. Terus keberipun kula lan sami niki ora-ora mikir teng beliau niki akan taklim kali keluarga, kita membacakan 1 hadis, 2 hadis tentang apa yang kita dapatkan belajar di sini, kita bacakan kepada, kita sampaikan kepada keluarga kita, ke rumah kita. Kan saling menyebarkan di lingkungan rumah kita. Kalau bisa, kalau ada kitab-kitab yang sudah kita kaji ataupun kalau ini ada fadilah amal itu tentang fadilah-fadilah, maka bagaimana setiap hari kita bacakan sehari 1 hadis sehingga ada suasana agama di rumah kita. Insyaallah ya. Insyaallah. Oke, jazakumullah khair. Terima kasih. Orang Indonesia sangat baik. Orang Indonesia sangat ramah tamah. Modernun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة فيها لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين واجعلنا من الراشدين واجعلنا دعاة إليك وإلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فزنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari bersama saking menyambut Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Akbar Al-Hanafi Al-Baristan ingkang pun terkenalkan sebagai Direktur Al-Infrastruktur. Mugi-mugi saged bermanfaat berkahi sedaya umat Islam meskipun sampai pun sampai di kata singgung ini panutuk kami yang mengasan kalau itu semoga cukup kami doakan alhamdulillah. Alhamdulillah.